Hello friends, welcome to your own channel eklavyaastrology, and today I'm going to discuss about the Rahu, the 12th and second aspect of Rahu actually. You have seen many people talking about 5th and ninth aspect of Rahu, but there are two other aspects, especially in Nadi astrology. There is a 12th aspect of Rahu. So today I will explain the effect of 12th aspect of Rahu in your birth chart. So whenever you see Rahu in the birth chart, you have to see which planet is sitting 12th from the Rahu, or you can say fourth from the Rahu or eighth from the Rahu. Either Rahu will expand the Karak Tattva of that planet or create some problem to the living signification of that planet. Uh, for example, Rahu in the sixth house and Venus moon in the Lagna. So this Rahu in sixth house is problematic for married life or for wife, especially because 12th from Rahu has the effect of Venus moon, trine aspect. I'm talking about trine aspect, or you can easily remember if any planet, if there is any planet, fourth, eighth, or 12th from Rahu, Rahu will give its Karak Tattva to that planet. Okay, and it can be bad for living signification of that planet. For example, Venus is wife, so it can be bad for wife and married life, but it can enhance the materialistic qualities or non-living things of Venus. Okay, so if there is fourth, Venus is fourth from Rahu, uh, or eighth from Rahu or 12th from Rahu, so it means that this Rahu can be problematic for married life or a wife, especially health related issues, but it can be good for earning money easily or something related to occult. It's uh, very good combination for wealth actually, because Venus is money and Rahu is expansion. Rahu disseminate the things. Rahu is an amplifier, so it will amplify. And there is a another aspect, that is second aspect of Rahu. I was reading a book last year. I was reading a book in Uttarakhand when I visited Rudraprayag. So I went to a very rare uh, place where I found some books of astrology, and in that book it is written when Rahu is in first house, the person will face some problem in the mouth or have a mole mark on the mouth. Also, the person will native will face problems related to teeth. So you have seen in Rahu in the first house, it can create problem related to family, or it can separate you from the family, or something related to disease, or something related to mouth and teeth. Negative result will happen. So the second aspect of Rahu is least discussed, or you can say it has its effect from the second house. Wherever your Rahu is placed, Rahu will influence the second house from itself. You can check it. You may ignore the fifth aspect of Rahu. Sometimes you will see that there is not much negative effect, or not much. Rahu aspect is not always negative. It can give you Raj Yoga as well. It can give you good power and position. It depends on the birth chart. I'll explain little bit about the 12th aspect and second aspect, so it will be more clear. So and this video will be both in Hindi and English. The English Hindi viewers can skip this part. So Rahu in the first house, it will have its effect on the second house. So if there is a malefic in the second house, it will act as a this aspect will act as a catalyst. Will Many times we ignore the fifth or ninth aspect of Rahu because it doesn't affect our life very much, or it doesn't give us a very bad events or very bad uh, influence. But suppose Rahu in Lagna in fifth house, there is a malefic planet. So we can say that aspect of Rahu will increase the malefic effect of that planet. So every aspect is not that much bad or good, you can say, but until there is a malefic planet in that house. Rahu in Lagna and malefic in the ninth house, it can be bad for father.
In the same way, Rahu affects its second house from itself. For example, Rahu in the 12th house, why it is good for foreign land? Because Lagna is your identity. Lagna is the area where you were born. So Rahu in 12th house, it can uh, create a bad effect on your first house. Definitely. If there is a malefic, it will be troublesome. If there is a malefic in the first house, it will be really a troublesome placement. For example, if you see the chart of Indira Gandhi, Rahu in the 6th house, married life, Rahu in the 6th house, she married to a foreigner or different culture or caste person, and it creates problem in married life as well. Moon in the second house, second from Rahu, so problem related to mother has happened. Now, if you see what you have to have whenever you consider Rahu in your birth chart, you have to see two things. 12th from Rahu and 4th from Rahu or 8th from Rahu is important if there is a planet in these houses. For example, Sun is there, Rahu is there, Sun is in the first house, and Sun is here or Sun is here. So, what is the logic? Rahu is retrogression, it is moving backward, and this planet is moving forward and meeting with the Rahu. So, this placement can be good for government or politics or politicians, but can be very bad for father. Some eyes related issue or migraine related issues can happen for sure, right? Living signification of the planet will get harmed. So whenever you see Rahu in your birth chart, what you have to see, you have to see if you have to see if there is a planet in the 4th, 8th, and 12th from Rahu. Then that Rahu will give its karak to that planet and will affect the living things of that planet. And whenever you analyze this Rahu, you have to take the influence of Rahu in the second house. Suppose Sun is there. So what will happen? Rahu will affect not only this Sun but this house as well. Create problem in the family. Will create eyes related issues. Will create teeth related issue or some problem in the mouth or some kind of big mark on mouth or face. This is how the Rahu aspect works. Now, in Indira Gandhi chart, Rahu is there, Moon is there, Sun is there. So Rahu's second aspect is in the 7th house, so and on the Moon, so it creates problems, or it not necessary problems, but Rahu is giving its aspect in the 7th house, so she married to a foreigner. Secondly, Rahu will give its 12th aspect on the planet, 12th from itself. So Sun is there, Sun is the government, Sun Rahu, Sun Rahu, Sun is moving towards Rahu. Problem with the father, but good for politics, government job, and many other things. In Nadi Jyotish, Sun is the elder son. So this Rahu created problem or short life for our elder brother, elder son. In Kane Ross chart, Rahu is there, Venus is there. So Rahu will give its effect on the second from itself. As I said, if there is a planet, 4th, 8th, and 12th from Rahu. 4th means here or here or here. Rahu will affect its Karak Tattva. So by sitting here, Venus Moon in Kane Rao chart, Shri Kane Rao's chart, Venus Moon in the Lagna. So this Rahu also plays a very important role in uh, delaying the marriage or negating the event of marriage in his birth chart. Rahu in the 6th house, the second aspect on the 7th house, and 12th aspect on Venus Moon. This is as per Nadi actually. You can consider Venus Moon here, trine connections. So the Venus Moon combination is one of the combination for denying the marriage.
I will make a very good video on that too. But Rahu is also acting as a catalyst, but Venus is a karaka of secret knowledge, and Rahu is brihad, disseminate the things, amplify the things. That's why he's a good astrologer. So eighth house from Rahu is very important, or the planet sitting eighth from Rahu is very important. This is as per Nadi. So whenever you see the chart and you see the placement of Rahu, what you have to see, the second house and the planet in the second house from Rahu, and the fourth, eighth, and 12th houses from Rahu, or planet in there in that houses. The 12th aspect of Rahu is almost negligible on houses, not on planets. See the difference. I'm talking about 12th from Rahu only if there is a planet in the fourth, eighth, and 12th house from that Rahu. Only then this 12th aspect will work. Okay. For example, somebody have Sun and Mars here, and Rahu is there. So what is happening? So what is happening? Rahu is as actually very strong. In this chart, Jupiter is here, Leo. So the dispositor of Rahu is at a very good placement. It is in Leo sign. So Rahu will give its second aspect on the 10th house and 12th aspect on this Sun and Mars. So it can be problematic for father and brother or husband, because Mars is husband in Nadi astrology. But it is very good for government job, because Sun Rahu is combination of great power and you can say government job. You can add the Karaka of the Rahu to that planet. For example, Rahu is the gate. Rahu is the gate, main entrance in Nadi. And Sun is the government. Sun is the king's palace. So when Rahu is in the ninth house and Sun is the eighth house, it's like the main gate of the king's palace. Raj Darbar. Mars is there. Mars is a security guard, or Mars is a protector security guard. So Sun Mars having next to Rahu indicates that there is a soldier, or there is a IPS officer or the police officer at the gate of the Raj Darbar, the protecting. So this lady is a IPS is an IPS officer. This is how we blend the Karak Tattva. As I said, Rahu will give the its Karak Tattva 12th from itself. For example, you got Moon in the 5th house and Rahu in the 6th house. So Moon is the travel, Moon is your living place, Rahu is foreign. So Rahu will give its character to the Moon. It's good for traveling, changing living places, travel, and all other things. Visiting the places, or like having big sea and all these. Because Moon Rahu is ocean. Moon is water, Rahu disseminates. So it's like big water place, right? But this placement is very good. Sorry, very bad for mother. So same predictions will be applicable if you got Moon in the 4th, 8th, and 12th house from Rahu. Okay. So what you have to see whenever you see the placement of Rahu, look at the 4th, 8th, and 12th houses from Rahu. If there is any planet, it will add its Rahu will give its character to that planet, blend that character, and make the predictions. And you have to see the second house from Rahu. Okay. So, for example, Rahu in the Lagna, and Venus in the 12th house, which is the Karaka of second house in Kalpurush Kundli. It's Venus, Vaibhav, enjoying the money, show off. So Rahu in Lagna can give him a good money, but problematic relationship with the family, or will move away from family. Kutumb, actually, not family. Family is not about your mother and father. It's more than that. It's Kutumb. Second house is Kutumb. It starts from your dada, grandfather. So I hope
So people have understand the 12th aspect of and the second aspect of Rahu. So whenever you see the Rahu next time, you can check it on at least 5 to 10 charts, then you can come back. So लेट्स स्टार्ट फॉर हिंदी व्यूअर्स। दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु की दृष्टि के बारे में, राहु की दूसरी और 12वीं दृष्टि। बहुत सारे लोग उनको दिक्कत होती है, चीजें समझ नहीं पाते हैं ना। ज्योतिष चीज ही ऐसी है, सबके समझ में आ जाए वो ज्योतिष थोड़ी है ना। मैंने कहा था कि शनि किस भाव से दशम है, किस ग्रह से दशम है, किस राशि से दशम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को चीज बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा इरिटेट करती है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अभी शायद उनको मालूम नहीं है कि आपका कोई भी प्लैनेट किन भावों से केंद्र में है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम अप्लाइज विद द जुपिटर। वो जुपिटर के लिए काम करता है कि जुपिटर किस भाव यानी किसके सेंटर में है। जैसे सप्तम भाव आपके 4th और 10th के सेंटर में पड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन आपका 4th और 10th के सेंटर में पड़ता है, तो ये दो हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन। इसी तरीके से प्लैनेट किन भावों और किन ग्रहों और किन राशियों की सेंटर के बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने जुपिटर के ऊपर वो बनाया नहीं, गुरु के ऊपर उसकी बात ही नहीं। तो चलिए आज हम राहु की बात करते हैं। राहु की द्वितीय दृष्टि का लॉजिक ये है कि जब उनकी उनकी गर्दन कटी तो उनकी दृष्टि अपनी गर्दन पर थी, मतलब अपने से नेक्स्ट में थी, ठीक है। और नाड़ी ज्योतिष में 5, 9 और 12 ये एस्पेक्ट लिया जाता है। तो जब भी आप राहु को देखें अगली बार, ये आपको प्रेडिक्शन में हेल्प करती है। जब भी आप राहु को देखें अगली बार, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट या जो भी उसका इफेक्ट होगा, जरूरी नहीं नेगेटिव, अगर राहु अच्छी स्थिति में तो पॉजिटिव ही जाएगा, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेशन को तो हार्म करता ही है अपने से सेकंड हाउस। मैं उत्तराखंड गया तो मैंने वहां पे एक ऐसी जगह पे गया जहां रेयर बुक्स थी। तो वहां पर एक काम में लिखा था कि राहु लगन में हो तो व्यक्ति के मुंह के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या मुंह के अंदर एक निशान होता है, ठीक है, या फेस पे एक बहुत बड़ा मार्क होता है राहु लगन वालों के। तो अपूर्व पाया जी, मैंने उनसे पूछा लॉजिक, तो उन्होंने मुझे बताया कि राहु की द्वितीय दृष्टि दृष्टि अपने से सेकंड हाउस में होती है, क्योंकि जब उसकी गर्दन कटी तो वो सेकंड हाउस में थी, ठीक है। और ये नाड़ी ज्योतिष में भी यूज होता है, बहुत अच्छे से यूज होता है। तो 2, 12 कनेक्शन प्रभाव देता ही है। तो राहु जहां पर बैठेगा अपनी दूसरी दृष्टि वहां पर जाएगी। अगर वहां का कारक भी राहु केतु के एक्सिस में आ गया तो प्रॉब्लमेटिक हुआ। इसलिए राहु लगन वाले को परिवार से दिक्कत, कुटुंब से दूरी पैदा करता है, लेकिन धन के लिए अच्छा होता है। स्पेशली अब 12वीं एस्पेक्ट की बात करें, 12वीं एस्पेक्ट आप तब लेंगे अगर कोई ग्रह राहु से 12वें, चौथे या अष्टम में बैठा हो, तब आप राहु की 12वीं दृष्टि लेंगे। लॉजिक क्या है, राहु इज रेट्रो, वक्री है, पीछे की तरफ जा रहा है। जो भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा वो यहाँ की तरफ जा रहा है। सो इट्स लाइक दे आर कॉन्साइंड, वो मिल रहे हैं, दे आर गेटिंग कंजंक्ट। राहु उसकी तरफ भाग रहा है और वो राहु की तरफ भाग रहा है। सो राहु अपने कारक तो उस ग्रह को देगा और अपने कारक तो उसको इफेक्ट भी करेगा, लिविंग सिग्निफिकेशन को भी हार्म करेगा। राहु से 12वें भाव में शनि बैठा हो, सॉरी चंद्रमा बैठा हो, ट्रैवल के लिए अच्छा है, फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा है, लेकिन मदर को प्रॉब्लमेटिक करता है, घर में वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। फॉरेन से रिलेटेड थिंग्स के लिए अच्छा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से बैठा हो, राहु यहाँ पे बैठा हो और मून यहाँ बैठा हो, तो दिस राहु इज रियली ट्रबलसम फॉर मदर एंड मदरलैंड। ये आपको रहने नहीं देगा वहां पे, बिकॉज राहु की द्वितीय दृष्टि यहाँ पड़ेगी। और 12वीं जो कारक कालपुरुष कुंडली में है नेचुरल, वो चंद्रमा है, तो वो भी राहु की तरफ बढ़ रहा है। तो वो इस तरीके से ब्लेंड किए जाते हैं। यानी राहु से 4, 8, 12 में अगर कोई प्लैनेट है तो आप उसके कारक तो उसमें ब्लेंड करेंगे, लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म करेगा। इसीलिए राहु से 4, 8, 12 में मंगल नहीं होना चाहिए। राहु से 4, 8, 12 में शुक्र अगर पीड़ित है चंद्रमा से या शनि से, वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये वेल्थ के लिए अच्छा होता है, ऑकल्ट के लिए अच्छा होता है। राहु से अष्टम भाव में शुक्र हो तो बहुत अच्छा होता है वेल्थ के लिए। इट्स रियली गुड, बिकॉज वीनस इज द कारक ऑफ सीक्रेट नॉलेज, वीनस हैज मेनी सीक्रेट नॉलेज। शुक्र को बहुत सीक्रेट नॉलेज है, मतलब गुप्त नॉलेज है, ज्ञान है। अगर मान लीजिए किसी का राहु लगन में बैठा और शुक्र 12 में बैठा, तो उसको धन बहुत देगा। क्यों? क्योंकि राहु का काम है फैलाना, बृहद कारक, राहु इज बृहद कारक। शुक्र 12 में बैठा, राहु लगन में बैठा तो द्वितीय भाव को भी देगा प्रभाव। तो परिवार से दूर करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये आपको धन जरूर देगा।
अब राहु लगन में हो, सूर्य द्वितीय भाव में हो, आप देखिए ऐसे लोगों के पिता के साथ समस्याएं रहती है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इश्यूज आते हैं, और परिवार से दूर करता है, कुटुंब सॉरी, सर आंखों में भारीपन की शिकायत, माइग्रेन का इशू ये रहता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप राहु की दृष्टि को ऐसे यूज करें, के एन राव साहब के चार्ट में अगर आप देखेंगे, राहु यहाँ पर बैठा हुआ है और वीनस मून यहाँ है। वीनस मून इज अ वेरी डेंजर, शुक्र और चंद्रमा की युति बहुत डेंजरस होती है शादी के लिए, बहुत सारे ना होने वाले लोगों की, शादी ना होने वालों में इस युति का रोल है। ऐसा नहीं कि सबकी नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम है, ये कॉम्बिनेशन है। अगर इस तरीके से है तो दिक्कत क्रिएट करेगा वाइफ को, मेंटल इश्यूज देगा, या वाइफ या आंट को या मदर को, इस ये दिक्कत क्रिएट करेगा। अब राहु के एन राव साहब का यहाँ बैठा है, द्वितीय दृष्टि यहाँ गई, मैलेफिक इन्फ्लुएंस यहाँ गया, ठीक है। वीनस मून पे 12वीं दृष्टि गई, क्योंकि वीनस मून को ऐसे हम यहाँ पे लेंगे इस तरीके, शुक्र चंद्रमा, तो उनकी शादी नहीं हुई, राइट। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप इंदिरा गांधी जी के चार्ट में देखेंगे, मून यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, मदर को प्रॉब्लमेटिक, मून वहां बैठा है, अपने से सेकंड में दृष्टि डालेगा, हाउस में भी दृष्टि डालेगा। राहु अपने से द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह और हाउस दोनों पे दृष्टि डालेगा, लेकिन अपने से 12वां में सिर्फ तभी दृष्टि डालेगा जब कोई ग्रह हो, और अगर लास्ट डिग्री में हो तो हाउस पे भी डाल सकता है, बिकॉज वो लास्ट डिग्री में है, तो हाउस में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहां मैलिफिक नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इंदिरा गांधी के चार्ट में यहाँ पे इस तरीके से है, मंगल के साथ एक्सचेंज में है, तो मार्स सन का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये राहु जब भी सूर्य सूर्य जब राहु की तरफ बढ़ रहा होता है, या सन राहु, ये फेम के लिए अच्छा है, पावर पॉलिटिक्स के लिए अच्छा होता है, तो उसको पावर पॉलिटिक्स दिया। अब आप देखिए उनकी शादी किससे हुई, किससे हुई, एक फॉरेनर से हुई, राहु का इन्फ्लुएंस सप्तम भाव में, और मैरिड लाइफ में समस्या, और या पति को समस्या क्रिएट हुई, जल्दी देहांत हो गया, मदर का भी प्रॉब्लमेटिक लाइफ रही, चंद्रमा बैठा है यहाँ पे, सूर्य राहु की तरफ बढ़ रहा है, तो यानी कि राहु की दृष्टि 12वें पे गई, यहाँ से अपने से 12वें, तो क्या हुआ, उनको सत्ता दी, उनको पावर दिया, है ना, राजनीति में आई। तो जब राहु से 12वें भाव में या 4-8 में सूर्य का इन्फ्लुएंस आ जाए, गवर्नमेंट जॉब दे सकता है आपको, पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं, दूसरी चीजें सूर्य से जुड़ी फोटोग्राफी या दूसरी चीजों में आपको लेके जा सकता है, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म करेगा आपकी। जैसे उनकी बड़े बेटी की मृत्यु हो गई, ट्रेजेडी कैंड हुआ, तो ये राहु का बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पे, राहु छठे भाव में। तो इस तरीके से आप जरूर समझे, जैसे अगर आपको कारक तो ब्लेंड करना है राहु का, मैंने कहा कि राहु अपने से 12वें भाव को, आपको देखना पड़ेगा कि राहु कितना स्ट्रांग है, यहाँ पे सन मार्स है, नाउ अंडरस्टैंड, दिस राहु इज गिविंग 10 सेकेंड रिस्पेक्ट, उसके दशम भाव पे जाएगी, और 12वीं सूर्य मंगल पे आएगी। लेकिन अगर देखें कि राहु का डिस्पोजल बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, जुपिटर गुरु लियो में है, मतलब कि सिंह राशि में बैठा हुआ, राहु इज द मेन गेट, राहु इज द मेन गेट, कहीं पर भी राहु सूर्य की तरफ जा रहा है, वक्री है तो सूर्य की तरफ जा रहा है, नो डाउट। व्हाट इज सन, सन पैलेस को रिप्रेजेंट करता है, या दुर्ग को, राजमहल को रिप्रेजेंट करता है, तो राहु सूर्य की तरफ जा रहा है, अपने कारक तो सूर्य को देगा, तो राजमहल का दरबार हो गया। मंगल क्या हो गया, मंगल होता है सिक्योरिटी, मंगल होता है गार्ड, प्रोटेक्शन। सो ये जो कॉम्बिनेशन ये बना रहा है कि राज दरबार में कोई पुलिस ऑफिसर या कोई गार्ड या कुछ इस तरीके से, मतलब मेन गेट जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लाइक मॉडर्न सेंस में इसको हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है, किसी पुलिस या किसी आर्मी या इस तरीके से, है ना, या तो दादा पिता या ये नेटिव खुद, इस तरीके से हम लोग कायक तत्व को देखेंगे। राहु की 12वीं दृष्टि आप तब लीजिएगा अगर 4-8-12 में कोई ग्रह बैठा है, उसकी लिविंग सिग्निफिकेशंस को हार्म करेगा, जैसे ये मंगल है, पति का कारक है या भाई है, तो दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। दूसरी दृष्टि आपने हमेशा लेनी है, भाव पे भी जाएगी और ग्रह पे भी जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि राहु की द्वितीय दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राहु तीसरे भाव में है, तो उसकी दूसरी दृष्टि आपके चौथे भाव में जाएगी, ये आपको मदर को दिक्कत करेगा, मदरलैंड से दूर करेगा, मानसिक तनाव देगा। और अगर गलती से चंद्रमा बैठ गया द्वितीय भाव में, तो ये 101% होगा, तो ये टेक्निक वहां पे काम आती है। तो आई होप क्लियर कुछ चीजें हुई होंगी। और राहु का इन्फ्लुएंस अपने से सेकंड हाउस में जाता है, वो किसी न किसी फॉर्म में जा सकता है, जैसे मैंने कहा राहु से लगन में हो, दांतों में तकलीफ, और मुंह के अंदर कुछ निशान या स्मॉल मार्क, ये सब दे सकता है, परिवार से दूर कर सकते हैं। तो ये चीजें तो आप
नोटिस करेंगे कि कितना इफेक्ट जा रहा है। राहु की द्वितीय, अपने से द्वितीय भाव में जो दृष्टि होगी वो भले ही कम होंगी, लेकिन अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाएगा उसमें तो वो डेफिनेटली उसमें एक कैटलिस्ट का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। वैसे आप जब राहु की पंचम नवम दृष्टि देखेंगे, वो ज्यादा कुछ दिक्कत करता नहीं है जब तक कि कोई पापी ग्रह ना बैठा हो उससे पंचम नवम। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट का काम करती है, वो बढ़ा देती है किसी चीज को। और ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन लिविंग थिंग को खराब करता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप चीज़ों को, टेक्निक को समझे होंगे। बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, कुछ समय बाद समझेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें समय लेती हैं समझ में आने में। कुछ चीज़ें जो है इंसान को इंसान नहीं समझाया करता है ना, वक्त समझाता है। ठीक है, तो वक्त का इंतजार करिए, वक्त बहुत कुछ समझाता है। चलिए लेते हैं अलविदा। और जिसको कोर्स करना है भृगु नंदी नाड़ी पे या कुछ भी, वो कांटेक्ट कर सकते हैं।